Okay. So what we have seen in multi-programming with a variable partition, whereas the size of a partition is not fixed at initialization of operating system. Initially, only one hole is available, but as the memory is allocated to the processes and then deallocated or releases from the processes, it will create the holes. And then we might have the free memory is more than the requested memory, but the memory management unit cannot allocate because the holes are not a contiguous one. So just take a problem, and for that problem, what we have, the solution is the compaction. What the compaction does that? Just as first we allocate why, first we try to understand why we requires the compaction. So compaction is the solution for the problem that is generated for what? Generated for multiple programming with variable a partition. Multiple programming with the variable partition. Again, it is a contiguous. It is not a not contiguous thing is not there. It is a contiguous thing is there. Multiple programming with the variable number of tasks, or either we can say tasks, MVT is also there. Okay. So now, for example, we have this portion is allocated for operating system. Then we have the 1 process, 2 process, and 3 process are there. This is the 50K is free and 100K is means total free memory is what? कितना फ्री आपके पास है? 150K फ्री मेमोरी आपके पास है, बराबर है. नया प्रोसेस जो है प्रोसेस 9, उसका रिक्वेस्ट कितना है? 125 का रिक्वेस्ट है. एंड इट अलोकेट्स 125. आपके पास 150K फ्री मेमोरी है, प्रोसेस का रिक्वेस्ट 125 है. डू यू हैव a contiguous hole of 125K available in your memory? No, we have the 2 holes are there, but none of that hole will satisfy your process request. And that's why what we require that this is nothing but what? This is external fragmentation. We have the free memory is available, but the free memory is scattered blocks are there, not a contiguous block is available. That's why it is not able to allocate it. So for that once, the solution is the compaction. अभी ये compaction solution क्या करेगा? अभी ये compaction solution ऐसे है, it will say the shuffles the memory content to place all the free memory together in one large block. Shuffle करो. अभी shuffle करने के टाइम पे कैसे है? अभी ये shuffling का कॉस्ट भी देखना है मुझे. देखो यहाँ पे हमने क्या क्या shuffle किया. ये प्रोसेस ये 50 वाला के जो है, इसको हमने क्या कर दिया है? ऊपर उठा दिया है, यानी एट द बिगिनिंग किया है. मगर एट दैट टाइम्स वी हैव नॉट शफल द प्रोसेस P2, क्योंकि प्रोसेस P2 शफल करने के बाद भी जो है वो मुझे एक ही होल मिलता था. तो अभी मेरे पास ये 150 वाला होल अवेलेबल है. तो अगर हमने यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमने कितने शफल किए हुए हैं? दोनों प्रोसेस शफल किए हुए हैं. कैन इट पॉसिबल विदाउट शफलिंग 2 प्रोसेसेस ओनली 1 प्रोसेस शफल किया? तो अगर देखो यहाँ पे 1 प्रोसेस शफल किया, कौन सा प्रोसेस मैंने मूव किया है? मेरे पास एक 90K वाला प्रोसेस मेमोरी में एलोकेटेड है. ये देखो 100K वाला है. तो क्या किया हमने? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये वाले डायग्राम में 2 प्रोसेसेस को हमको क्या करना पड़ा? मूव करना पड़ा उसके जगह से. हाँ, ओरिजिनल जगह से. अगर ओरिजिनल जगह से मूव करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके लिए मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के लिए क्या सपोर्ट होना चाहिए? रीअलोकेशन शुड बी डायनामिक. देखो प्रोग्राम के लोडिंग के टाइम पे तो अलोकेशन हो गया था. प्रोसेस P3 को ये कुछ तो भी बेस एड्रेस मिला है, ये कुछ तो भी लिमिट एड्रेस मिला है. हाँ, ये बेस और कुछ तो भी लिमिट एड्रेस मिल गया है. अभी क्या हो रहा है? अभी प्रोसेस का बेस एड्रेस चेंज हो रहा है. तो रीलोकेशन जो है, रीलोकेशन रजिस्टर में अभी जो 100 वैल्यू है उसके बजाय अभी यहाँ पे कौन सा वैल्यू हो गया है? फॉर एग्जाम्पल 500 हो गया. वैसे ही प्रोसेस 8 का भी वैल्यू चेंज हुआ. यस, प्रोसेस 8 का भी वैल्यू चेंज हुआ है. तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? कॉम्पैक्शन के लिए, दैट कॉम्पैक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है कि relocation should be dynamic, relocation should be at a run time. Okay, so that is the one thing. अभी यहाँ पे मुझे अगर कॉस्ट कम करनी है तो मैंने क्या कर दिया है? ये 3 को और दोनों 8 को मूव करने के बजाय मैंने सिर्फ 3 को मूव किया. हाँ, कहाँ पे मूव किया है? जो अवेलेबल होल था. अभी ये अवेलेबल होल होने के बाद यहाँ पे कितना है? ये 10K है. अभी हो सकता है ये 10K बोलो तो क्या हो जाएगा?
हाँ, ये 10K इज नथिंग बट अ स्मॉल होल। अभी ये जो ए होल है, देयर मे नॉट बी अ प्रोसेस इन माय सिस्टम, मेरे सिस्टम में ऐसा प्रोसेस ही नहीं है जिसको 10K लगने वाला है, बराबर है, जिसको 10K लगने वाला है। सो दैट इज अगेन अ वेस्टेज ऑफ अ मेमोरी, दैट इज द अनदर प्रॉब्लम। ओके, सो व्हाट वी रिक्वायर दैट वी आर shuffling the contents of a memory from one location to the other location, so there is a shuffling cost is involved, and for that one, what is the other requirement is that, other requirement is that your relocation should be the dynamic relocation that we require. So the solution is there, but the cost is more. Solution is there, but the cost is more. So cost of compaction is what? 2 GB of RAM, 10 nanosecond का access है, cycle time to 5 second to a compact. So disk is much slower as compared with here the RAM one. So wants to minimize the external fragmentation, तो उसके लिए क्या है, या तो फिर आप लार्जर का ब्लॉक बनाओ, लार्जर स्लाइस के ब्लॉक बनाओ, जैसे अभी यहाँ पे आपको 125K का चाहिए था तो 150 के ब्लॉक बनाओ। बट अगर हमने लार्जर साइज का ब्लॉक बनाया तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन होगा। सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ। हाँ, so at sometimes we say that sacrifice some internal fragmentation for reduce the external fragmentation, और सेकंड सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन जो है वो पेजिंग है। Means in place of having a contiguous allocation, what paging tells you? The paging tells you that we should go for the non-contiguous allocation. What we should go for? We should go for the non-contiguous allocation. In place of going for the contiguous allocation, we should go for the non-contiguous allocation. So that is the solution for the trade-off that we have in between the contiguous allocation for internal fragmentation, for external fragmentation. Internal fragmentation means wastage of a space. External fragmentation, we are having the free blocks are available, but that cannot be allocated as we don't have the free blocks in a contiguous manner. And if you are doing a compaction, the compaction cost is more. Okay, so we have the solution in terms of what? We have a solution in terms of a non-contiguous one, and for that one non-contiguous is what? पेजिंग वन। सो मेमोरी मैनेजमेंट में हमने क्या देखा है, फिक्स पार्टीशन देखा है, लिंकिंग एंड लोडिंग देखा है, वेरिएबल पार्टीशन भी देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या जाएंगे, नॉन कंटीजियस के लिए पेजिंग के लिए जाएंगे। Okay, so let us start with the memory management on part 1 MCQs. The first MCQ is in front of you. We are going to play it now like a KBC, but I am not Amitabh Bachchan, but you are the great contestant. First question. First question आपके स्क्रीन पे है. What the question is that? Runtime mapping from a virtual to physical addresses is done by virtual to physical addresses. Who is going to translate the virtual addresses to the physical addresses? What is the virtual addresses that we should know? Virtual address बोलते कौन सा addresses? The addresses which is generated by your CPU. That we can say as the virtual addresses are also called as the logical addresses. Physical addresses बोले तो कौन से? The addresses which is seen by the memory management or the memory management unit. What is the answer for the first question? Okay, very good. So who will done this one? This is done by the memory management unit. Just as I told you, the virtual addresses are generated by the CPU. The virtual addresses are also known as the logical addresses. Next question is now on your screen. What is compaction? For that ones, we have the 4 options are there. A techniques for overcoming internal fragmentation, a paging technique, a technique for overcoming external fragmentation, a technique for overcoming fatal error. Okay, so the correct answer is a C1, a technique for overcoming external fragmentation. This external fragmentation is related with what? Is related with MVT, multi-programming with a variable number of tasks.
By using the multi-programming with variable number of tasks, it increases the degree of multi-programming. Whereas internal fragmentation is we can get with multi-programming with fixed number of tasks. Here, the degree of multi-programming is equal to the number of partitions. Paging technique, this is for the non-contiguous memory allocation. Let's go for the next question. In contiguous memory allocation, each process is contained in a single contiguous section of memory. All processes are contained in a single contiguous section of memory. The memory space is contiguous. The memory space is non-contiguous. What is your answer? So the correct answer for this one is A. See here, in A, B, C, the contiguous word is there. So we can eliminate this D option. The memory space is contiguous. Okay, that is there in your question. जो क्वेश्चन में है वही यहाँ पे बोला है. वहां पे सिर्फ अलोकेशन यूज किया था, यहाँ पे वर्ड कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस इज कंटिन्यूअस है. तो ये ऑप्शन पे उतना कुछ सुटेबल नहीं है. तो आपके लिए सुटेबल ऑप्शंस कौन से हैं? ए एंड बी. So whether all the processes are in a single contiguous sections or each process is contained in a single contiguous section. तो अगर आपने ये वाला डायग्राम देखा है, this diagram may be for your MVT, multi-programming with variable number of tasks, or we can say multi-programming with fixed number of tasks. What we have, this is the one contiguous partition. This is the other contiguous partition. This is the third contiguous partition. So each process के लिए, हर एक के लिए क्या है? अभी हमने देखा था ना कॉम्पैक्शन के टाइम पे, हर एक प्रोसेस के लिए क्या है? हर एक प्रोसेस के लिए एक एक पार्टीशन है. Either that partition may be of a fixed size or that partition may be of the variable size. तो आपका each process किसमें है? आपका each process is contained in a single contiguous section. So that is the correct answer for this question. Next question. The first speed, base speed, worst speed. Again, we may have, in some cases, we may have the next speed also. जो मैंने लिया नहीं है, हमारे बुक में नहीं है, but we may have the next speed also. Again, one is there that we can find out and tell me in next session. First speed, base speed, worst speed, next speed. Strategy is to select what is related. Process from queue to put in memory, processor to run the next process, or the free hole from a set of available hole, or all this. Which is the correct option for this one? So the correct option for this problem is a C. First feed, base feed, and worst feed is related with selecting the free holes from a available memory. As we have seen, कौन सा free hole select करना है? The first one which is large enough to accommodate your request, or the hole which is small enough to accommodate your request to search the entire free hole, search the entire table. This I have already given you when we have learned about the multi-programming with a variable number of tasks. See, when we say about the process from queue to put in memory, this is done by the CPU scheduler. This is done by the CPU scheduler, not by the first speed, base speed, and worst speed. They are the strategies to select the free hole from the available list of holes. Chalo, go for the next question. A solution to the problem of external fragmentation. अभी हमने discuss किया था, so its answer is the compaction. I'm not going to discuss this one because we have already discussed this problem. Next question. Sometimes the overhead of keeping the track of a whole might be larger than the memory, larger than the whole itself, very small, all of these. ये क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक इंसिडेंट बताता हूँ, या उसको स्टोरी भी समझ लीजिए आप सपोज फॉर एग्जांपल शर्ट का कपड़ा खरीदी करने गए हो, और आपको जो शर्ट के लिए जो कपड़ा चाहिए that we required as a 2 मीटर, आपको 2 मीटर चाहिए से खरीदी करना है, और आपने जो सिलेक्ट किया है, वो कितना है वहां पे, उसके पास जो बचा हुआ था वो कितना बचा हुआ था?
हाँ, उसके पास सपोज फॉर एग्जांपल 100 मीटर का वो जो कुछ ये था बॉक्स था, वो 100 मीटर के बॉक्स में से सिर्फ बचा कितना है 2.25, 2.25 मीटर बचा है। हाँ, तो अभी वो पर्टिकुलर शॉपकीपर क्या करेगा? आपका तो रिक्वायरमेंट 2 मीटर का है। हाँ, अभी ये 2 मीटर का है, तो ये 2 मीटर आपको मिल रहा है ₹400 में। बराबर है, 2 मीटर कितने में मिल रहा है आपको? ₹400 में मिल रहा है। तो एट दैट टाइम व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बचता कितना है आपको 2 मीटर देने के बाद? 0.25। हाँ, एक एक क्या बोलेगा उसको हम, एक सिंपल सी ऐसी स्ट्रिप होगी, एक सिंपल सी ऐसी क्या रहेगी वो 0.25 बोले तो, और स्ट्रिप रहेगी। अभी इसका क्या करेंगे? बेचा जाएगा क्या? ये बेचा नहीं जाएगा, ये वाला जो है बेचा जाएगा क्या? नहीं बेचा जाएगा। तो इसको अगर उसको रखना है तो ओवरहेड हो गया उस केस में। अगर ऐसे ही स्मॉल 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 बचते तो वो क्या हो जाएगा? ओवरहेड हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है इसका? लार्जर देन द होल इटसेल्फ। तो ये जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो आपको क्या करके देगा? ये शॉपकीपर आपको बोलेगा भाई साहब, बहन जी आप 400 दे दीजिए, मगर आप 400 में क्या कर दीजिए, ये पूरा क्या पूरा ले लीजिए, क्योंकि ये 0.25 मुझे रखने में कुछ मतलब नहीं है। Same incidents that we can see when you go to the in vegetable market. Normally if you go when the vegetable market is going to be closed, जब आप भाजी वाले के पास जाओगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि क्या है जो बची हुई थोड़ी सी जो वेजिटेबल है वो रखने के बजाय क्या है वो दे देने में उसकी भलाई होती है। ओके, तो गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू मेमोरी एड्रेस कैन बी डन। कब होता है? लोड टाइम पे होता है, कंपाइल टाइम पे होता है, मेमोरी टाइम पे होता है, कि लोड एंड कंपाइल टाइम पे होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बोथ है, ए एंड बी, 1 and 2। हाँ, इट विल डन एट द कंपाइल टाइम। ओके, कंपाइल टाइम तो बराबर है, मगर लोड टाइम, डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज हमने देखे हैं, मॉड्यूल देखे हैं, स्टब हमने लर्न किया है। हाँ, स्टब इज अ स्मॉल स्पेस, हाँ, वेयर वी कैन कीप एड्रेस ऑफ अ मेमोरी फ्रॉम वेयर वी शुड लोड इट। अगर वो जगह पे नहीं है तो हम क्या करेंगे? मेमोरी में नहीं तो क्या करेंगे हम? वी कैन ब्रिंग इट फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इनटू द मेमोरी। तो आपका बाइंडिंग जो है वो दोनों टाइम पे होता है, लोड टाइम पे भी है, कंपाइल टाइम पे भी है। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज डायनामिक लोडिंग? अभी मैंने उसका आंसर दिया है। डायनामिक लोडिंग बोल तो क्या हो जाएगा? हाँ, लोडिंग रूटीन ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड, जब वो कॉल किया जाएगा। तो डायनामिक लोडिंग के लिए हमने अभी जो वर्ड यूज किया था वो क्या था? स्टब करके है। हाँ, सो वो स्मॉल आपका क्या है फाइल है, दैट इट कंटेन्स द हाउ टू लोड दैट पर्टिकुलर फाइल फॉर योर, और हाउ टू assign that particular file or particular module for your process. So that is done by the stub. So loading a runtime only when it is called, that is called as the dynamic loading. Next question. Who will swap the processes in and out of the memory? मेमोरी में से प्रोसेस स्वैप इन और स्वैप आउट कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो मेमोरी मैनेजर। हाँ, मेमोरी मैनेजर और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट विल डू द टास्क ऑफ swapping the processes in and out of the memory. चलो, move for the next question. Which of the following is true? नीचे दिए में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओवरले आर यूज्ड टू इंक्रीज द साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी। Overlays are used to increase the logical address space. When overlays are used, the size of process is not limited to the size of physical memory. Overlays are used whenever the physical address space is smaller than the logical address space. Which is correct for the overlays? The correct answer is C. When overlays are used, जब ओवरले का यूज हो जाएगा तब क्या है? द साइज ऑफ प्रोसेस इज नॉट लिमिटेड टू द साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी। हाँ, फिजिकल मेमोरी जैसे मैंने आपको बताया था, फिजिकल मेमोरी आपका 2 MB का है, तो आपका प्रोसेस एड्रेस प्लेस 16 MB का हो सकता है क्या? तो यस, प्रोसेस एड्रेस स्पेस में बी ऑफ 16 MB। ये 2 MB का हम क्या करेंगे? 2 MB का सिर्फ मेमोरी में रखा जाएगा,
बाद में के 40 जो MB है वो हम जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मेमोरी में लाएंगे। हाँ, अभी अगर हमने डी का, कुछ लोगों ने अपने आंसर दिया है, सी फिजिकल एड्रेस स्पेस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द लॉजिकल एड्रेस स्पेस। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा रैम कितने MB का है। हाँ देखो, ये हमने कैसे अंडरस्टैंड करना पड़ता है, रैम है। और आपका हार्ड डिस्क कितने इसका है? हार्ड डिस्क तो आपका 1 TB का है। हाँ, 1 TB बोल तो कितना हो गया? 1 TB इज नथिंग बट 1024 GB। हाँ, देखो 16 MB देखो और गीगाबाइट देखो, सो इट इज ऑलवेज देयर। आपका फिजिकल एड्रेस स्पेस जो होगा इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द लॉजिकल एड्रेस स्पेस। ओवरलेज आर यूज टू इंक्रीज द लॉजिकल एड्रेस स्पेस। नहीं, लॉजिकल एड्रेस स्पेस का और ओवरलेज का कुछ ये नहीं है। कैन ओवरलेज यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ मेमोरी? फिजिकल मेमोरी आपकी बदलेगी नहीं, फिजिकल मेमोरी है जितनी है उतनी ही रहेगी। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फिनिश हो गए क्वेश्चन।